also comes with a variation where you can simply keep your hands on your head like this and inhale and breathe out. Imagine just one practice to relieve stress and cerebral tension, and not just alleviate anger, anxiety and insomnia, but also increase the healing capacity of the body. Just one practice and you can feel its vibration in your brain, in the frontal region of your head. And this is the Bhramari pranayama. This is one of the most magical but one of the most simple pranayama that you can practice. So in this case it is very simple. Okay, just sit either in the Siddhasana, keeping your feet like this, or in the lotus pose, however you are comfortable. Okay, make sure your backbone is straight, don't bend it, because we are going to work on our entire respiratory system. All right, take a deep breath. Now you have to fold your fingers like this, और ये जो एक उंगली है ना, ये हमारे जो ईयर्स हैं इसको ब्लॉक करेगी. ठीक है, तो द रीज़न दिस इज कॉल्ड हमिंग बर्ड और भ्रामरी प्राणायाम, बिकॉज इसमें हम जो हमिंग बी होती है ना, जो भौरे होते हैं, हम उसकी आवाज़ निकालते हैं सांस बाहर छोड़ते हुए, यानी कि एक्सहेल करते हुए. तो पहले आप आराम से इनहेल करेंगे और फिर जब आप एक्सहेल करेंगे तो यू विल क्रिएट अ हमिंग बी साउंड. ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है कि हमारे जो टीथ है, दांत हमारे, वो बिल्कुल ऐसे लॉक्ड नहीं होंगे, उसमें थोड़ा सा गैप होगा, लूज गैप होगा, एंड आवर लिप्स विल बी लॉक्ड. ओके, यानी कि टीथ विल नॉट बी लॉक्ड ऑन ईच अदर, लिप्स विल बी लॉक्ड. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. Put your both these fingers on your ears, block your ear ताकि कोई आवाज़ अंदर ना जाए. ठीक है, you blocked it. अभी now you will breathe in, take a deep breath, and now when you will exhale by creating a humming bee sound like See, when you will do this, you will feel the entire vibration in your frontal head region. ठीक है, इसमें आपको आपकी ध्वनि खुद अंदर सुनाई देगी. It will vibrate in your frontal head, in your skull, and this helps creating vibrations in your brain. ठीक है, तो let's practice this for at least 5 times so that it is clear. Backbone straight, ears locked, teeth loosely gap or lips will be locked. Okay, now breathe in. The sound will be continuous. ओके, इसको तोड़ के नहीं करना है. जब जितनी देर तक एक्सहेल कर सकते हैं उतनी देर तक दिस साउंड विल कंटिन्यू. ओके, नाउ ब्रीथ इन, एक्सहेल, also comes with a variation where you can simply keep your hands on your head like this and inhale and breathe out. You will feel the entire vibration in your head. Alright, and this is the best way if you want to just see and feel the result, and this one if you are capable enough to block your ear holes with this.
So now the question is when to practice this. See, you can practice any pranayam in the morning, but if you are suffering from insomnia, you are unable to sleep. जब आप सोने जाते हैं तो दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, बहुत थॉट्स आते हैं, दिमाग शांत नहीं होता. सोने से पहले you can practice this. You will feel so much relieved. Your overthinking and anxiety will be reduced, and this will help you get a better sleep. Okay, so this is all about Bhramari. But make sure that if you have any heart disease और अगर आपको ब्रेथ रिटेंशन में प्रॉब्लम है, सांस जल्दी लेने में या उसको एक्सहेल करने में प्रॉब्लम है, तो भ्रामरी इज़ नॉट गुड फॉर यू. For everybody else you can practice this, but again contraindications are very important. And अगर आपको कोई major surgery है तो please practice this under the guidance of a competent yoga teacher only. Thank you.